Welcome back to the biology by Sravanti. So today I am going to explain about the bryophytes. So these bryophytes are nothing but these are moss plants. Phyta is nothing but plants. So these are moss plants. So to stay for this, so before going into the topic, so if you like my channel, please subscribe. So coming to the characteristics of Bryophyta. So these Bryophyta mainly stay in on land. That is nothing but these are terrestrial plants and they grow mainly in shady places. But they need water for fertilization. ठीक है? So वो land पे भी stay होते हैं as well as fertilization के लिए पानी का अंदर भी जाता है. So इसका वजह से ये ब्रायोफाइट्स को हमने क्या बोलते हैं बोलते हो एम्फीबियंस बोलते हैं द एनिमल और द प्लांट्स विच स्टे इन द वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड वी कॉल इट एज द एम्फीबियन प्लांट्स सो दिस ब्रायोफाइट हैज़ अ नेचर ऑफ वो लैंड पे भी स्टे हो सकता है एज वेल एज दे कैन स्टे इन द वाटर फॉर और दे नीड कंपल्सरी वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन इसलिए दिस ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज amphibious plants. So इसका अंदर 960 genera plants हैं and about 25,000 species present है ठीक है so coming for the life cycle of bryophytes they mainly show sporophytic nature as well as gametophytic nature so स्पोरोफाइटिक नेचर बोलते स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं एज वेल एज गैमेटोफाइटिक स्टेज बोलते हैं गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स भी रहता है सो कमिंग फॉर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट सो दिस वेजिटेटिव बॉडी प्लांट इज अ थालॉइड और अ लीफी स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट्स द गैमेटोफाइटिक जनरेशन ठीक है सो तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन बोले तो इसका अंदर थालॉइड लाइक स्ट्रक्चर रहता है दिस थालॉइड लाइक स्ट्रक्चर का वजह से और लीफी लाइक स्ट्रक्चर का वजह से इट इज़ रिप्रेजेंटेड और प्लेस्ड अंडर द गैमेटोफाइटिक जनरेशन स्पोर प्रोड्यूसिंग सो इसका ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट रहते हैं इसका अंदर स्पोर्स रहता है सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स सो और स्पोरोफाइटिक जनरेशन का अंदर होता है तो इसका लाइफ साइकिल के अंदर फाइट्स लाइफ साइकिल के अंदर गैमेटोफाइटिक जनरेशन होता है एज वेल एज स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी होता है सो कमिंग फॉर द राइजॉइड्स सो द राइजॉइड द bryophytes have a root-like structure. So that root-like structure is called as rhizoids. So that root-like structure is called as rhizoids. So ये जो rhizoids है unicellular plants में अलग से रहते हैं and multicellular plants में भी रहता है. So in liverworts को आए तो it is helpful or it is of unicellular and coming for the mosses it is an multicellular. तो ये rhizoid का function क्या है तो mainly वो it helps in वाटर को ऑब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प होता है एज वेल एज मिनरल एब्जॉर्प्शन करने के लिए होता है एंड वो जो प्लांट है उस हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ थैलस ऑन दिस सबस्ट्रेटम सो सबस्ट्रेटम के वो फिक्सेशन करने के लिए भी हेल्प करता है सो दैट इज़ अबाउट द rhizoids. Next coming for the classification of bryophytes. So the bryophytes are classified into two types. One is liverworts and another one is mosses. One is liverwort and another one is mosses. Coming for the liverworts. So these liverworts are also called these are primitive group bryophytes. That means lower members of bryophytes. Next gametophytes possess flat plant body called as thallus as we discuss about the thallus. So this thallus is green रहता है so you can see here in picture green रहता है and dorsiventral and prostrate with unicellular rhizoids. So here you can see the rhizoids in the picture. So coming for the example it is nothing but Raceca and Marchandia. So ये liverworts का जैसे another one will be called as hornworts. Another one called as hornworts. So these hornworts, these are the members of possessed a flattened thallus. So इसका thallus का ऊपर कैसे horns present होता है ये thallus का ऊपर horns present होता है so इसका वजह से they are called as horniworts and these thallus produce horny structure which are called as sporophytes hence the name hornworts. For example Anthraceous.
एंथ्रोसेरस. So this is about the horn warts. So horn like structure present होता है इसका वजह से इसका नाम horn warts है. This is also included in the liver warts. So next coming for the mosses. So this, let us see about the mosses. So mosses is nothing but these mosses are advanced members of bryophytes. Liverworts was the lower members of the bryophytes, and these mosses are the advanced members of the bryophytes. So they possess erect plant body. So you can see here in picture they possess the erect plant body, and the life cycle include protonema stage as well as the leafy stage. So life cycle includes protonema stage as leafy stage. The protonema is prostate, green, branched and filamentous and it also called as juvenile gametophytes. So this part is called as protonema part, which is a branched leg and filamentous and complete green in structure. Thus the protonema helps in vegetative propagation. ये जो gametophytic phase है, it helps in the vegetative propagation में help करता है. Next coming for the leafy stage. Leafy stage has erect, slender, stem-like and main axis bears a spherical leaf-like structure called as phylloid. It is fixed by soil by multicellular branched rhizoids. So here you can see the rhizoids. So this stage bears the sex organs. The vegetative reproduction takes place by fragmentation and budding in the secondary protonema. So this life cycle also shows the sporophytic and gametophytic life cycle. स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन्स दिखाता है यहाँ पे. गैमेट्स का वजह से भी फर्टिलाइजेशन होता है, स्पोर्स का वजह से भी फर्टिलाइजेशन होता है. कमिंग फॉर द एग्जांपल फिनेरिया, polytracheum and sphaginum. So thank you for this session. If you like, please subscribe to my channel.